Good morning, students. Today we'll start a poem written by William Wordsworth, a poet who really talks and writes about nature and its beauty. The name of the poem is I Wandered Lonely as a Cloud. Now, this poem is just describing when the poet suddenly comes or over or just watches the daffodils by the riverside and feels the joy in his heart. This is being expressed by the poet in the poem very beautifully with simple comparison. Here, the poet himself is speaking about how he felt when looking at the beautiful yellow lovely bulbs. These flowers are like bulbs. Can you see the protrusion here inside? So ऐसे लगता है जैसे bulb बाहर आ रहे हो, and they're so yellow and glowing that gives the joy to the anyone who looks around them, looks over them, right? So let's see. We are going to read how this poet feels when he looks at daffodils. Before I start, I let you know that these daffodils are basically found in Northern America और इंडिया में इसको हम नरगिस फूल के नाम से जानते हैं, राइट? नरगिस दिल्ली में स्प्रिंग सीजन में ब्यूटीफुल राष्ट्रपति भवन में फ्लावर्स की वो लगती है ना, एक शो हो सकता है वहाँ पे ज़रूर उगते होंगे बिकॉज इट्स स्प्रिंग सीजन में ही ब्लूम होते हैं ये फ्लावर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विल जस्ट read it and see how we could appreciate the poet's poetry, right? So reading is must. Let's see. I wandered lonely as a cloud that floats on high over the vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Let's read once again. I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. So, who is actually speaking the poem? The poet himself, William Wordsworth, is the speaker of the poem. Here, I refers to the poet himself. He is wandering. Wandering means when you're roaming aimlessly. He is comparing, he's using the figure of speech simile. Simile means when you compare one thing to other, right?
So here he is comparing himself to be a cloud. कैसा cloud? A lonely cloud who is just roaming here aim and there aimlessly, who's just moving aimlessly. So he compares himself as a lonely cloud who is alone and moving here and there aimlessly. And suddenly what he sees? That flows high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. वो अचानक से क्या देखता है? Crowd means here भीड़ होता है, क्राउड का मतलब यहाँ वो कहना चाह रहे हैं अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स. होस्ट का मतलब भी यहाँ पे क्या है? अ लार्ज नंबर. तो वो एकदम से क्या देखता है? अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स. और ये डेफोडिल्स है कहाँ? दे आर जस्ट बिसाइड अ लेक. लेक के पास है, अलोंग द बे, उसके मार्जिन में है, राइट? बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे. beneath means under. फ्लटरिंग वैसे तो बर्ड्स या बटरफ्लाइज फ्लटर करती है. फ्लटर मतलब जब हम मूव कर रहे हैं अनस्टेडीली, रुक रुक के, विथ फ्लैपिंग विंग्स. यहाँ फ्लावर्स को कह रहा है फ्लटरिंग. दैट मीन्स दे आर मूविंग अनस्टेडीली. जैसे जैसे हवा पानी को हिला रही है, साथ साथ ये फ्लावर्स भी डांस कर रहे हैं इन द ब्रीज, हवा में. ठीक है? फ्लटरिंग इज मूविंग इन एन अनस्टेडी मैनर, नॉट continuous. ठीक है? So this is how he just in the first stanza of 6 lines, it is the poet is conveying that he suddenly watches a large number of daffodils by the river bank. Okay? Now second paragraph, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन. और कैसे दिख रहे हैं? जैसे आसमान में सितारे दिखते हैं चमकते हुए रात को, इस तरह सुबह सुबह जब वो देख रहा है फ्लावर्स को, एक बड़ी सी रो है फ्लावर्स की, राइट? जैसे फ्लावर्स मिल्की वे इज द नेम ऑफ अ गैलेक्सी, ट्विंकल करते हैं. नाउ इट्स ही इज कंपेयरिंग द फ्लावर्स टू द स्टार्स. अगेन ही इज यूजिंग द सिमिली, राइट? और ये फूल कैसे हैं? दे आर जस्ट स्ट्रेच्ड. देखो अपोस्ट्रफी मतलब इट्स जस्ट पोएटिक, पोएम का वे है, बट द वर्ड इज स्ट्रेच्ड, ई इज मिसिंग, राइट? स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे. बे मतलब किनारा, राइट? हेयर द एंड ब्रेक इन द रेगुलरिटी. सो वो पूरा बे तक, किनारे तक बिल्कुल फैले हुए हैं, ऐसे जैसे पूरी नेवर एंडिंग लाइन हो, राइट? 10,000 सौ. कह रहे मैंने तो ऐसे लगता है एक ही ग्लैंस में. लुक इज अ क्विक, ग्लैंस मीन्स अ क्विक लुक. एक क्विक लुक में मैंने जैसे 1000 10,000 से अराउंड फूल देख लिए हों. और वो फूल क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? टॉसिंग देयर हेड्स, अपने हेड्स को, like flowers only. Tossing means moving in a sprightly dance. Sprightly means energetic and lively. That means very happy. They're looking very energetic. They're dancing in the, dance किसे कर रहे हैं? Obviously with the breeze, हवा के साथ झूम रहे हैं, right? The waves beside them dance. अब पोएट क्या कह रहा है? जो waves हैं वो भी डांस कर रही हैं. Dance means they are also moving with the wind, the breeze. बट दे आउटडिड. आउटडिड मतलब उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है डांस करने में? फ्लावर्स की. आउटडिड मतलब जब हम किसी को पीछे छोड़ देते हैं. सो वो कह रहे हैं वेव्स आर ऑल्सो डांसिंग, बट दे, यहाँ दे किसके लिए लगा है? फ्लावर्स के लिए, राइट? कौन से फ्लावर्स? डेफोडिल्स. सो कह रहे हैं डेफोडिल्स जिस तरह से हिल रहे हैं इन हैप्पीनेस, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, वो वेव्स की हैप्पीनेस को भी आउटडिड कर रहे हैं. दैट मीन्स वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. ठीक है? ऑब्वियसली एक जब हवा में, जब हम नदी के किनारे होते हैं, हमें बहता हुआ पानी भी बहुत अच्छा लगता है ना, वो भी सुंदर लगता है, हमें हैप्पीनेस देता है ना? इसी तरह ये फूल भी हवा में झूमते हुए वेव से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे. गे अगेन मीन्स हैप्पी. वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ को देखकर एक पोएट क्या होगा? ऑब्वियसली बहुत खुश होगा, है ना? उस एक पोएट को क्या चाहिए? एक हैप्पी कंपनी चाहिए. जो कंट मीन्स हैप्पी, लाइवली, चीयरफुल. एक पोएट को
अच्छी ऐसी कंपनी ही चाहिए होती है, एक ऐसा ही नज़ारा चाहिए होता है। वो कहता है जब मुझे ऐसी कंपनी मिली इन फ्लावर्स की, आई गेज्ड एंड गेज्ड। यहाँ गेज जैसे ग्लांस क्या था, एक क्विक लुक थी, है ना, जल्दी से हरिडली कुछ देखना। गेज क्या है, स्टेडिली किसी चीज़ को देखना, काफ़ी लंबे समय तक देखते रहना, एक टक नज़र से देखना। सो आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट what wealth the show to me had brought. शो कौन सा शो, डेफोडिल्स का शो, राइट। वो देखता रहा, फिर उसके दिमाग में एक थॉट आई कि उसे क्या मिल रहा है इससे, राइट, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। अब वो लास्ट पैराग्राफ में अपनी वेल्थ बता रहा है कि उसको इस सीन से क्या हासिल हुआ, या व्हाट ही हैज़ अचीव्ड। For oft when I when on my couch I lie. पोएट कह रहा है ऑफन, ऑफ्ट यहाँ इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑफन, कि ज़्यादातर जब भी मैं अपने रेस्ट में काउच पे, काउच मतलब अ काइंड ऑफ अ सोफा जहाँ आराम से बैठता हूँ, जब मैं बैठता हूँ इन वेकेंड और इन पेंसिव मूड, जब खाली होता हूँ, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, पेंसिव मतलब थॉटफुल मूड, ठीक है, जब मैं डीप थॉट में होता हूँ, जब हम बहुत गहराई से सोचते हैं, ऐसे मूड में जब पोएट कभी भी अपने अकेले बैठता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, अगेन दे इज रेफरिंग टू द फ्लावर्स, द डेफोडिल्स। इनवर्ड आई मतलब द इनर, और यू कुड से द ड्रीम्स और द थॉट्स विच आर डीप इन आवर हार्ट, ठीक है, वो फ्लैश अपॉन कर देती है, मतलब मुझे मेमोरीज फील होती हैं, और उन डेफोडिल्स की मेमोरीज जो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हैं, वो मुझे क्या देती हैं, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस मीन्स व्हेन यू आर वेरी वेरी कंप्लीटली हैप्पी, और सॉलिट्यूड मीन्स बीइंग अलोन। एक एकांत में भी जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, वो पोएट को कैसे मिल रही है, विद द सीन ही हैड वॉश ऑफ द डेफोडिल्स। डेफोडिल्स उसके दिमाग में इतने क्लियरली दिखाई देने लगते हैं व्हेन ही इज़ फ्री एंड सिटिंग अलोन, कि उसे बहुत आनंद मिलता है उस सीन को दोबारा देख के। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। जैसे वो डेफोडिल्स डांस कर रहे थे, उस पोएट का उस सीन को रिमेंबर करके दिल भी बहुत खुश फील करता है। हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, उसका दिल खुशी से भर जाता है उस सीन को मेमोरीज में याद करके, राइट। सो दिस इज द ब्यूटिफुल पोएम, आई वॉन्ट यू टू रीड इट अगेन एंड अगेन. Try to read with proper stress and intonation, and then the homework is find out the rhyming pairs. Rhyming pair means not only rhyming pairs, even I want you to find rhyming scheme, pairs and scheme, right. Find out in the next class. We'll discuss what are the different rhyming pairs and what is the rhyming scheme of this poem. It is a 24-line poem with 6 lines in each stanza. Okay? So find out rhyming pairs and scheme. Scheme is the pattern that is repeated in the poem, and pairs means the words that rhyme, right? Giving the same sound, ending sound. That's all for the day. Enjoy. Bye bye.